I had asked a few questions to some of my friends, and one of them asked कि मैं वो questions पहले answer करूँगी and then I'll receive the answers from them. So I'm I'm answering my questions through this video. I'll try to answer in parts. I'm not sure if I'll be able to complete all the 5 in one video. So let me give it a try. The first question was the biggest lesson I have learned professionally and personally. So professionally, the biggest lesson, I think there are many, to be honest, but if I try to recollect a few, the first one was whenever you get an opportunity to work, treat it as a blessing. सबसे important चीज़ I have observed in corporates, most of the people try to avoid the work. उन्हें ऐसा लगता है कि लोग उन्हें burden कर रहे हैं by passing on their work. Now, as an experienced corporate professional, I can tell you, whenever you get a fresh work and a new work, or whenever you feel like somebody else is transferring their opportunities to you, grab it. Grab it, because with every work that you do, you're going to learn something. हाँ, कुछ चीज़ों में repetition बहुत होता है, तो try कि instead of repetition you get some kind of fresh projects, but never say no to work. Never say no to work, because work is a blessing. अगर आज है तो feel blessed, क्योंकि पता नहीं कल होगा कि नहीं. वैसे भी हम AI वाले वर्ल्ड में रह रहे हैं, तो nobody knows. Second thing, this one I'm still learning, but I've realized I am in process of learning. I have not yet mastered it. The second thing I have learned is power dynamics. No matter where you live, even at your home, power dynamics exist. Power dynamics exist in corporates also. It exists in your family also. It exists in schools also. It exists in hospitals. Everything, every place you can think of. But the thing is, not all of us have mastered it. Some of us are in the middle of it, some of us are at the bottom of it, and some of very few people are, at the top level of it. Whether you know it or not, you are a victim of it. To become the master of it, you have to have a very strong emotional mind. I'm still gaining that strength, so I'm not very sure how that can be mastered. I may talk about it in future, but as of now I would not like to answer that question. So the second question was personal life ka biggest lesson, and my answer is emotional independence. People will come, people will go. बहुत बार ऐसा होता है ना, हमें पता नहीं चलता है कि हमें इमोशनल नीड्स हैं, and those emotional needs make us vulnerable to the treatment of people. इस पे मैं बहुत एलॉबरेटिव एक्सटेंड पे बात कर सकती हूँ, बट आई ट्राई टू कीप इट शॉर्ट. When we do not have emotional independence, we crave for connections, we crave for appreciations, we crave for acceptance, and all of these things, जब तक सामने वाला पार्टी अच्छा है, till the friends or the relationships that you are in, till those people are good to you, you will not realize कि आप सामने वाले पे emotionally dependent हो. You will realize the dependence an emotional connection can cause when the person becomes nasty, or if you come across somebody who does not support you. So आप में इतना इमोशनल स्ट्रेंथ डेवलप करने का ज़रूरत होगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, स्पेशली व्हेन यू क्रॉस योर 20s, कि आप अकेले खुश रहो. आई जेन्युइनली मीन खुश रहो, नॉट जस्ट सरवाइव करो, नॉट जस्ट जी लो, ऐसी ज़िंदगी है. नो, you have to have a bright smile on your face. You have to have the strength, the courage to get back when you have a bad day, a bad mood. You have to learn to light up yourself. You have to learn to observe your negative emotions, let them go, let them pass away, not panic. I'm not saying I have mastered it at a zen level, but I'm learning, I'm trying. You have to observe when you're angry, you have to observe when you're sad, when you are feeling demotivated, when you're feeling envious of somebody else, when you are feeling behind from your expectations, when you feel you are incapable. You have to name your emotions.
एंड इमोशनल इंडिपेंडेंस हेल्प्स बिकॉज जब आप इमोशनली इंडिपेंडेंट होते हो ना, तो आप किसी के सामने जाके रोते नहीं हो कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, मुझे नहीं पता ये कैसे सॉल्व करूँ. You may say that you should have friends, you should have best friends, you should have this and you should have that, but every information that you're passing to somebody else is a treasure that you're giving to the other person. आज वो इंसान आपके साथ बहुत अच्छा है, you're lucky if that person does not betray you in future. बट इतना रस लेना ही क्यों है ना, अपने इमोशंस खुद प्रोसेस करना सीख लो. दैट इज द बिगेस्ट लेसन आई हैव लर्न इन पर्सनल लाइफ. So the next question was, how did when did I feel that I need to change some of my patterns and how did I do it? यार मुझे ऐसा लगता है मैं हर 5 साल में बदलती रहती हूँ. आई कीप ऑन चेंजिंग माई सेल्फ, या वो शायद ऑटो ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है. जैसे कि अभी भी आई एम इन अ ट्रांसफॉर्मेशनल मोड, जब मुझे ये लगने लगा है कि आई एम टू नाइस टू पीपल, और आई एम somebody who can be treated as a doormat sometimes. Very very strong word to say, but मतलब वो एक जो power dynamics I was talking about, I am learning that. So I feel I'm in that phase जहाँ पे वो पावर डायनामिक्स सीखने वाला जो स्टेज होता है, वो उसमें मैं भी हूँ. व्हेन डिड आई फील इन पास्ट? यार शायद मुझे बहुत बार लगा ऐसा कि मुझे अभी अपने पैटर्न्स चेंज करने का ज़रूरत है. इफ़ आई कैन रिकॉल एनी, तो it was when I felt some unhealthy attachments in life, and I felt कि यार ये तो मतलब माइंड में अगर रहे तो it occupies a lot of space. And the friends I had, the people I had around, मुझे बहुत फ़र्क पड़ता था कि ये लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं. आई यूज टू टेक फीडबैक्स फ्रॉम पीपल कि मैं क्या गलत कर रही हूँ, व्हाट डू यू थिंक कि मुझे क्या चेंज करना चाहिए, क्या इम्प्रूव करना चाहिए, जो कि टू सम एक्सटेंट अच्छा होता है. लेकिन आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम पीपल स्टार्ट मेकिंग फन ऑफ यू बिकॉज दे सी यू एज एन एंटिटी हु डज नॉट हैव अ कॉन्फिडेंस. So feedback should be taken, but not from everybody, not from any random person, no matter how close those people are. Not everybody is capable of giving your feedback. Not everybody has the strength to accept your tantrums. And it times as when I used to just speak up everything I used to think without filtering it out, without thinking कि सामने वाला इंसान मेरे वो इमोशंस लेने के लिए केपेबल भी है कि नहीं है. So I think I felt I faced a lot of criticism for that. I faced a lot of gossips, behind the back gossips. So over the period of time I realized I need to constrain my emotions. I need to learn to process my emotions on my own. So learning to shut up was that time जब मुझे लगा कि दिस इज़ द टाइम आई नीड टू चेंज माई पैटर्न्स. आई नीड टू री प्रोसेस कि मैं क्या सोच रही हूँ. मैं जो सोच रही हूँ वो मुझे नहीं बोलना है. दैट वॉज वन थिंग. एंड द सेकेंड थिंग, मुझे सोचना भी नहीं है. मतलब फर्स्ट स्टेज वॉज कि जो मैं सोच रही हूँ वो मुझे कहाँ नहीं बोलना है. सेकेंड स्टेज वॉज कि मुझे सोचना भी नहीं है. फिल्टरिंग दैट आउट वॉज चेंजिंग like a that was like changing a pattern. The next question was, what made me feel emotionally fulfilled and what made me feel emotionally empty? So emotionally fulfilled तो शायद मुझे बहुत सारी चीज़ों ने किया है. The first thing I would recall is prayers. I have a very close connection with God, and मैं अपने इमोशनल प्रोसेस करने के लिए आई स्पीक टू गॉड. अब आई विल नॉट गो इन टू दैट डिस्कशन कि आप भगवान को मानते हो या नहीं. इट्स योर कॉल. मैं अपना बता रही हूँ. इट हैज़ हेल्प मी ट्रिमेंडसली. द फर्स्ट रीज़न इज़ इट मेड मी इमोशनली इंडिपेंडेंट. मुझे किसी और के पास जाके रोना नहीं पड़ता, या ना मुझे अपने थॉट्स किसी को बताने पड़ रहे हैं. आई एम नॉट गिविंग माई इन्फॉर्मेशन टू समबडी एल्स. वो बोलते हैं ना कि अपने मन की बात किसी और से कहने से दूसरा अपना नहीं होता है, सामने वाला व्यक्ति अपना नहीं होता है, बात पराई हो जाती है. सो आई स्टॉप्ड डूइंग दैट. सो जब भी मेरा लो मूड होता है, जस्ट लिसन सम स्पिरिचुअल सॉन्ग्स. आई कॉल इट म्यूजिकल मेडिटेशन, एंड दिस हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड मी एज अ पर्सन बिकॉज इट हैज़ गिवन मी अ लॉट ऑफ इमोशनल स्ट्रेंथ. मैं क्या बोल रही थी? हाँ, मैं बोल रही थी व्हाट हैज़ मेड मी इमोशनली
एम्प्टी एंड इमोशनली फुलफिल्ड. सो इमोशनली फुलफिल मुझे किया प्रार्थनाओं ने, गोइंग क्लोज टू गॉड फुलफिल्ड मी इमोशनली परमानेंटली. मतलब बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो मुझे इमोशनली फुलफिल करती है, लाइक व्हेन आई रीड अ गुड बुक, व्हेन आई ट्राई टू लर्न समथिंग लाइक प्लेइंग गिटार, भले वो एकदम टूटे फूटे स्टेज पर है, या फिर टॉकिंग टू अ ट्रस्टेड पर्सन और टॉकिंग टू अ मेंटर, seeing an opportunity to learn something, watching a good show, watching a good web series, कोई भी ऐसी चीज़ बहुत सारी हो सकती है. पर इन सब के साथ प्रॉब्लम क्या है ना, ये आपको इमोशनली फुलफिल करती है फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, देन यू अगैन गो बैक टू ज़ीरो और मे बी माइनस. पर प्रार्थनाओं के साथ बहुत बड़ा पॉजिटिव साइड ये है कि वो इनफाइनेटली की जा सकती है. पता नहीं यार, सबका इमोशनल कनेक्शन डिफरेंट हो सकता है, बट फॉर मी इट्स लाइक मैं रात भर सिर्फ भगवान जी की कुछ ब्यूटिफुल सॉन्ग सुन के सो सकती हूँ, उठ सकती हूँ. देन व्हेन आई टिल द टाइम आई एम नॉट ओके, आई कैन कीप ऑन लिसनिंग दैट एंड माई माइंड विल कीप ऑन प्रोसेसिंग द कचरा ऑफ इट, एंड वो फिल्टर होके अपने आप सॉर्ट आउट हो जाता है. सो दैट हैज़ मेड मी इमोशनली फुलफिल्ड. इमोशनली एम्प्टी मुझे किस चीज़ ने किया है, द फैक्ट इज़ बहुत सारी चीज़ों ने, बट इफ़ आई नेम अ फ्यू, सबसे ज़्यादा तो इन्वेस्टिंग इन रॉन्ग पीपल. जब आप इमोशनली इन्वेस्ट करते हो लोगों में एंड इफ़ यू डोंट गेट द रिटर्न बैक, मतलब आप किसी को पूछे जा रहे हो कि भाई तू कैसा है, क्या हाल चाल है, एंड यू डोंट गेट दैट बैक. आई एम नॉट सेइंग कि लोगों में इमोशनली इन्वेस्ट ये सोच के करो कि आपको वापस कुछ मिलेगा, बट एटलीस्ट ये देखो कि आपको वापस हर्ट ना मिले, सामने से अप्रिसिएशन ना मिले, एक्सेप्टेंस ना मिले, वो सब एक बार के लिए आप प्रोसेस कर लोगे, लेकिन ना सामने से अगर हर्ट मिल रही है ना, रुक जाओ, रुक जाओ. द मोर यू ट्राई टू सेव दैट रिलेशनशिप, या वो एक स्टॉक मार्केट का एक कोट है, डोंट कैच अ फॉलिंग नाइफ. मुझे लगता है इट अप्लाइज ऑन पीपल ऑल्सो. इफ़ यू कैच अ फॉलिंग नाइफ इन relationships also, it will cut you and you will bleed. So stop when you see the other person is not invested. The next question was who I was 10 years ago and how do I see that person now? I think I was a very emotionally messed up person 10 years ago, and I see her with compassion, and I pat her back for the courage she kept. I know she was dealing with some emotional wounds, she was dealing with some unsolvable riddles. मतलब एक बोल सकती हूँ कि आई हैव टेकन अ प्रिटी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टू सॉल्व सर्टन प्रॉब्लम्स, बट आई एम सुपर ग्लैड आई केप्ट ऑन गोइंग एंड आई डिड नॉट स्टॉप. सो आई adore you as a person, and I'm proud of you. I admire the courage you kept, and I know you have big dreams, and I know there's a long way to go. We are together in this journey. So the last question was the changes I wish to see in next 10 years. So I think some economic changes I would like to see, like better taxation in India, because everybody I see around criticizes the tax system in India. The second one I personally want to see changed is transportation. I really wish a country to do better in airline industry. That is my hardcore wish. Apart from that, if I talk about on personal level, I think I wish to be a better orator, a better speaker. That's why I'm practicing this, speaking through this video and all. There are some additional skills that I would like to acquire, and maybe work on some ventures someday in future. uh, yeah, बहुत सारी चीज़ें यार. It's very difficult to sum it up. Maybe get better with my friends and relationships, and keep up more actively with people, because I'm an introvert, and I think I really need to work on talking to people. I have been making efforts to do that lately, but I think there's a lot of scope where I can get better into this. Professionally तो यार मुझे लगता है कर्म करो फल की चिंता मत करो. आई स्ट्रांगली बिलीव इन दैट, बिकॉज आउटकम से जब हम अटैच होते हैं तो हम इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं, एंड जब हम इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं तो द प्रोसेस सफ़र्स, the input suffer when you are too attached to output. So I don't want to think about output. I will give my best and I will see what results God has
kept it for me. Love you. Take care. Bye bye.